Good morning to all of you. I am Harshvardhan. Now we study today's second module of chemistry lesson, matter in our surrounding of standard 9th. Example of diffusion. The dissolving of a potassium permanganate KMnO4 in water slowly down motion of particles, Brownian movement of purple color to get into spaces between the particles of the water. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर्स मूव करते हैं और कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि ये मूवमेंट जो है ये होता है और इस तरह के मूवमेंट्स को डिफ्यूजन करते हैं. तो लेट अस टेक अ बीकर, सपोज दिस वन बीकर इन विच वाटर आर kept and this tablet of potassium permanganate. ओके, अगर से इसके पार्टिकल्स को देखेंगे क्या कि कुछ टाइम के समय के बाद ये डिसॉल्व होना शुरू हो रहा है और ये डिसॉल्व होकर के सारे पार्टिकल जो है मूव कर करके टोटली पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, दिस वन इज द कलरलेस एंड आफ्टर सम टाइम्स दे बिकम पिंक. इट मींस देयर पार्टिकल्स आर मूव विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन्स टू गॉट टू एवरी पॉइंट्स. ओके, the movement of a KMnO4 particles to get space in water by diffusion. इसमें पार्टिकल जो है KMnO4 का वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रैंडमली, जैसे कि हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कैसे हुआ? तो ये डिफ्यूजन्स के मदद से हुआ. ओके, द डिफ्यूजन्स, व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमॉन्ग ईच अदर ऑन देयर ऑन so that they becomes a mixed uniformly is called diffusion. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करते हैं अपने आप. ओके, सपोज के लिए मैं एक सैंपल लिया जिसमें दो गैसेस के मिक्सचर हैं, तो दोनों गैस के मिक्सचर रैंडमली आपस में मूव करेंगे, मिक्स होंगे. ओके, नेक्स्ट नोट, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज लेसर देन लिक्विड. लिक्विड में जितना डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो रेट सॉलिड से ज्यादा होगा. नेक्स्ट, एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज लेसर देन गैस. और गैस में जो लिक्विड में जो डिफ्यूजन होंगे वो गैस से कम होंगे. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, यहाँ पे मैंने देखा कि सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे लिक्विड में मिक्स होते हैं. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. ओके, इट मींस कि हम लोग डिफ्यूजन पढ़ेंगे जिसमें दो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है. ओके, आपस में ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन लिक्विड. इट फॉर्म्स अ वेपर इजीली. ब्रोमीन वेपर्स इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज हेवियर देन व्हाट? एयर. यहाँ पे मैंने देखा कि ब्रोमीन जो है, जैसे इस ब्रोमीन गैस को ब्रोमीन ऐसे एक्चुअली में लिक्विड होता है. ओके, बट जैसे उस ब्रोमीन को अपने सैंपल्स को किसी भी टेस्ट ट्यूब से अगर ओपन किया जाए तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा और वो गैस में कन्वर्ट होकर के और नेक्स्ट सराउंडिंग एयर के गैस से वो मिक्स होगा एंड दिस कॉल्ड द डिफ्यूजन. Now we take an example that's when air and bromine are mixed together, then both are mixed called diffusion. But bromine gas are heavier than air. Then why it mix and bromine gas or vapor are move upward? Because due to the force. Okay. Examples, just like it, due to collisions of the gas between the constituent particles of air and vapors of bromine vapors are mixed towards and uniform move to each other. Though bromine vapors is heavier than air, even that is goes up against gravity and mix with air in the upper jar because its particles are moving with high speed. Okay, high speed or due to its kinetic energy. Note, the existence of particles in matter and their randomness in liquids was given by Robert Brown in 1827. Okay, ब्राउन यानी कि पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी मैटर के मूव करते हैं और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग ब्राउन मूवमेंट कहते हैं. तो ये सारे चीज जो है कंसेप्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दिया. नेक्स्ट, another examples of the Brownian movements in gases are this tiny dust particles move here and there
because they are constantly heat by this fast moving particles of air. ओके, अनदर एग्जांपल जैसे देखा जाए तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं तो वो भी एक ब्रोमियन मूवमेंट है, वो भी एक डिफ्यूजन है. नेक्स्ट जो असाइनमेंट इज राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच फॉर डिफ्यूजन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 एग्जांपल्स सॉलिड्स के, लिक्विड के और गैस के आपको देने हैं जिसमें डिफ्यूजन शो. दैट्स ऑल. थैंक यू.